Today we are going to talk about power in a LCR circuit. So maybe you have observed that actually there is a sequence. First we are introducing the alternate voltage to the different components. If there is only resistor, then only capacitor, then only inductor. Then we took all three together, and yesterday we talked about before this we talk about the uh, 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 quality factor. Quality factor is the resonance time, that how much resonance will at which frequency the resonance. Now we are going to talk about the power, and after that we will be talking about LC oscillation. So power in AC circuit. Power in AC circuit for LCR circuit. We have seen that at any instant the voltage is given by Vm sin omega, and the I is given by when at any instant of time t in a LCR circuit, if voltage any time is this and current any time is this, where phi is the difference between uh, करंट एंड वोल्टेज एट सम इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे वोल्टेज और करंट में जो गैप है, जो डेल्टा है, फेज डिफरेंस है, वो फाई यहाँ पे है. और वी नो दैट इफ यू वर्क कैलकुलेटिंग द पावर इन एनी सर्किट, इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंस्टेंट वोल्टेज एंड इंस्टेंट करंट, and if you put the values, it is going to become Vm Im sin omega t plus phi. Hope you understand. It is going to become like this. Okay, now from here if we multiply and divide it by 2, it is Vm Im by 2 sin omega t sin omega t plus phi. We know the formula 2 sin A sin B is equals to cos A minus B minus cos A plus B. So when we apply this formula, we can write that it is equals to Vm Im by 2. From here, what is cos A minus B? This minus this, it's going to be cos phi minus cos. If you add this both of, you will get 2 omega t plus phi. How you are getting? Add this. Once you separate, you will get phi. It is here. Once you add, you will get this term. Okay. Now we know that this value is going to be 0. So finally, because average value, because average power we are going to talk now. In a AC circuit, only average can be discussed. So if we look at this, we will find that the term which is free from the time, this is the term which is free from the time, will be survive, and rest of this term will become 0, as the average value of cos 2 omega t is going to be 0. So finally power is going to be Vm Im by 2 cos phi.
or it also can be written Vm by root 2 Im by root 2 cos phi, which is actually DC voltage V, DC current V, I and cos phi, and finally it can be written as it is I square Z in LCR circuit. V equals to I upon Z, so it can be written I square Z, V equals to IZ, it is I square Z cos phi, for where Z is the impedance. Z is the impedance of the circuit. So this is all about the power of a LCR circuit. We have seen everything, we have discussed everything in this. Now we are going to discuss the LC oscillations for this. LC oscillations is the last topic for this chapter, and after that the electromagnetic wave will start, and I think that is not in syllabus, so it is going to be finished. Okay, LC oscillations is the next topic to be discussed. So power in a AC circuit containing inductor, capacitor and resistance is at any instant in LCR circuit. The voltage is this, current is this, power will be voltage into current or current into, these are the trigonometric terms. Here multiplied by 2, divided by 2, multiplied by 2, because we know that sine terms can only be simplified by using this trigonometric formula. Okay, when we applied this, 2 cos will come out from here, and 2 cos is this. Between them there will be minus sign. This term will become 0 mathematically, because this is the average of any cosine or sine function is always 0, because one part is positive, in another time it is negative. So one negative, one positive, it always goes to the 0. It equals to the 0. Then average power, this term will become 0, so this whole term will become 0 actually. Hope you understand. Okay, and this term, because it is free from the time, so it will be stay there as a power factor or as a power. Now I am going to discuss about the LC oscillation. After this, you observe it.
consider a circuit here you see there is no battery in the circuit. Initially, suppose when we charge the capacitor, at t equals to 0, the charge on capacitor was maximum. Because first we will charge the capacitor, then we will bring and connect into the circuit. Now what will happen actually, as the time will spend, as the time will pass, some current will flow through it. Now initially what will happen, initially the charge will be decreasing here, and it will be having more and more flux will induce here, and due to that the EMF will produce inside this. And one time will come when the charge here will become 0. After that it will again, because here the current will produce, and this current will again start charging the capacitor. Okay, so means initially the charge is fully charged, means here is the electrical energy is going to come, it will become 0, then it is going to be 0 here in capacitor, whereas initially the magnetic energy inside the inductor was 0, and after some time it will become the maximum. So here the electrical energy is getting converted into the magnetic energy, and magnetic energy is going to be converted into the electrical energy. This is only the process, so that here the energy actually is, energy here actually oscillating, actually energy is moving, energy move नहीं बोल सकते, you can say it is, energy is actually going from capacitor to inductor and inductor to capacitor, and that's why it is, जैसे as we say ना, the oscillation means when this object goes here, then goes here, then goes here, then goes here. So here say here, here to here. That's why capacitor to inductor, inductor to capacitor. The energy is actually going and coming between this, and this is known as a oscillation. That actually is not a original oscillation, physical oscillation. Its name is given only oscillation. It not means that it is going like this. It's not like that. The only energy is, one time it is stored in capacitor in the form of electrical field, and when it is coming, when capacitor becoming 0 charge, neutralized, okay, it is stored here, because energy cannot be created nor be destroyed. एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, एनर्जी को हम बना नहीं सकते, तो ऐसा, तो एनर्जी का पैकेट जो है वो एक फिक्स एनर्जी दोनों के बीच में, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो है आ रहा है और जा रहा है, तो इस वजह से हम इसको ये बोलेंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो यहाँ पे हम किरचॉफ का लॉ लगाएंगे, तो जब यहाँ से करंट आई फ्लो होगा और by applying Kirchhoff's law, so the total voltage in the circuit is 0. Voltage at capacitor minus voltage at inductor, दोनों का वैल्यू 0 होना चाहिए। वोल्टेज एट कैपेसिटर कितना होगा, Q by C होगा, इसका कितना हो जाएगा, माइनस L di by dt इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप देखो कि यहाँ पे इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो किस पोस्ट पे हो रहा है, किसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, चार्ज इज गोइंग टू बी डिक्रीज बट करंट इज इंक्रीजिंग। सो हम बोलेंगे कि यहाँ पे करंट जो है वो चार्ज के डिक्रीज से पैदा हो रहा है, कैपेसिटर अपना चार्ज दे रहा है और वो चार्ज फ्लो हो रहा है,
दैट्स वाई इसको करंट मिल रहा है। तो यहाँ करंट किस कॉस्ट में मिल रहा है, द नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दैट चार्ज इज गोइंग टू बी डिक्रीज, एंड इट इज ट्रू, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि कैपेसिटर पूरा खाली हो गया और यहाँ का पूरा चार्ज करंट बनकर फ्लो हो गया, और जब वो सारा करंट इसमें से गया तो इसने देखा कि अरे यार मेरी वजह से ये डिस्चार्ज हो गया, तो ये वापस उसको चार्ज करता है, तो ये पूरा चार्ज करने में इसका एनर्जी क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो उसके पास जाके वापस फुल चार्ज हो जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। दिस गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन, जब तक कि वो, अभी कब तक चलेगा, ज़्यादा देर नहीं चलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है हर बार इन द फॉर्म ऑफ हीट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, so it will be going up to this, the energy is not going to be becoming zero. As the energy will become zero, because it will be spitted in the form of heat or some other reasons, most of the heat only, and this system will stop. Here oscillation simply means that energy is going to be dancing between these two. This is, now if I put the value of this here, this equation will become Q by C plus L d square Q by dt square. It's a differential equation in second order, so it is the differential equation in second order, it is clear. Or we also can be write this as a if I divide L, it can be written as d square Q by dt square. If we take L common, अगर L को कॉमन लेके रखेंगे तो हो जाएगा Q अपॉन एल सी इक्वल्स टू 0। इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, और वो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा उसको हमें देखना है। तब हमको मिलेगा Q इक्वल्स टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी। इसको ध्यान से देख लो, अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। Because differential equation solution you don't know, that's why physics allows you to write the solution of this directly, so it is adopted directly, you can write the solution. So you are allowed to write the direct solution, because no need of doing that all stuff. As you know that one more thing is here, when Q will be equals to Qm, because T will be 0 and phi will be 0, so you that know, if I differentiate it, if I differentiate this dq by dt, Qm d by dt cos omega t plus phi will give you I equals to Qm will be omega minus sin omega t plus phi, and this minus sign is minus I to minus will cut, and I will be equals to Q1 omega sin omega t. Okay, Q
can be written as I am here maximum power. So I equals to m sin omega 0 t. Phi equals to 0. It implies there are some certain assumptions that suppose if t equals to 0, he is taking phi equals to 0 and he is taking q equals to qm. So initially max m मतलब चार्ज मैक्सिमम था, यह सपोज मैंने बोला तो था कि t इक्वल्स टू 0 पे हम कैपेसिटर को चार्ज करके लाएंगे तो उसका चार्ज मैक्सिमम ही होगा ना, तो q को qm लिखेंगे यहाँ पे, q शुड बी रिटन एज अ qm. तो q इज अ मैक्सिमम चार्ज मींस इट इज फुली चार्ज एंड द करंट विच वाज फ्लोइंग लाइक दिस, जो करंट वहाँ पे फ्लो हो रहा था वो किसी भी टाइम पे जो करंट है वो इतना होगा, किसी भी टाइम पे सर्किट के अंदर करंट इतना होगा. यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है. अब यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो हमने पहले देख लिया कि कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी होता है, हमने पहले पिछले चैप्टर में देख लिया. तो एनर्जी इन कैपेसिटर वी ऑलरेडी नो दैट इट इज हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर. ओके, और यू ऑल्सो कैन बी रिटर्न इट एज अ हाफ क्यू स्क्वायर एम, हाफ क्यू स्क्वायर एम बाई सी. दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. So this is the potential because charge is at rest. So charge is at rest and capacitor will be showing the potential energy. Now in your figure textbook there is figure 7.19 in which it is shown that how it is happens. So पहले केस में हम देखेंगे तो यहाँ पे it is given that पहले केस में कैपेसिटर, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कैपेसिटर एंड इंडक्टर. तो इसके बीच में क्या हो रहा है, सबसे पहले इसके पास एनर्जी मैक्सिमम था, ठीक है. तो इसके पास ये एनर्जी मैक्सिमम था, कितना था ये, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है ना, इसको जाने. इसके पास था आपका हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2m और इसके पास 0 था, ठीक है ना. इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी रहेगा 0 होगा. कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि एक साइकिल के अंदर ये 0 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये कितना होगा, ये भी हमने निकाल के रखा है पिछले चैप्टर में, Li स्क्वायर. होप यू अंडरस्टैंड. यस, इट इज Li स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर. और बीच में इसका 50-50 भी होगा, जब ये होगा इसका आधा आधा तो ये एनर्जी जो है उस जाएगी इधर से इधर इधर. तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो उसके पास एनर्जी होगा, इंडक्टर में कोई करंट नहीं है तो वहाँ पे एनर्जी 0 होगा. इसके बाद ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है और यहाँ पे जब चार्ज 0 हो जाएगा तो इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा. तो ये सब सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि एनर्जी डिसिपेट नहीं हो जाती इन द फॉर्म ऑफ हीट. अब आता है हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है. ट्रांसफार्मर आपका लास्ट टॉपिक है. ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर होता है आपका व्हेन वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी and when we generate the electricity, when we transport it from the place of generation, the place where we are originating the electricity to the cities, villages and this by using the high voltage towers. That time what we process, we use a particular process in which, because why the transformers are used, so our next topic will be transformers. Everywhere at corners or at the corner of your society you will be might you have seen about the transformers, and sometimes it burns also during the summer time. It becomes very hot, and that's why due to the hot day sometimes it catches fires. So what are the transformers and how many types of transformers are there, and for what purpose we use the transformers,
These all the things we will be discussing in the next video, and that will be the last topic of this chapter. And with this chapter will be over, and you just start completing, just complete your notebook, because as soon as the schools will be opening, I will be checking your notebooks, and it will be checked. तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो पूरी तरह से कैपेसिटर के पास जब स्टार्टिंग में जीरो था, तो यहाँ पे जब अगर हम स्टार्टिंग में बात करें t इक्वल्स टू ज़ीरो और ये हो गया t इक्वल्स टू टी, तो स्टार्टिंग में ये फुली कैपेसिटर के पास बहुत सारा चार्ज था, उसके पास बहुत सारी एनर्जी थी। जैसे जैसे टाइम गुजरा, ठीक है, तब इसके पास कुछ नहीं था, तो ये ज़ीरो था। ओके, और फाइनली यहाँ पे हमने देखा कि एलसी ऑसिलेशन में हो क्या रहा है, the electrical energy of capacitor is converting into the magnetic field energy of inductor and vice versa। इसका उल्टा भी है। तो कैपेसिटर पहले इंडक्टर को देखता है कि यार, जैसे हम होता है ना कि भाई हम खाना खा रहे हैं सामने वाला ट्रेन में, तो हम ऑफर करते हैं उसको, भाई चल तू भी खा ले। तो पहले कैपेसिटर ने उसको करंट दिया, क्योंकि वो करंट खाता है। कौन? इंडक्टर ऑलवेज टेक्स करंट। ओके, सो हाउ मच करंट इट इज टेकिंग एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय आई एम साइन ओमेगा 0t और लाइक दिस। ओके, so this is the current which goes from capacitor to this, and again this current which is produced over there is flowed. After when the capacitor will become discharged, the inductor will decide to recharge it again, and this process will be there. Again the capacitor will be charged, it will again keep decreasing the charge with respect to the time. It will flow the current into the inductor, and inductor again will reduce its current to zero, and the charge will become fully. If suppose there is no loss of heat, if suppose there is no loss of energy, then this full energy will be keep oscillating between capacitor to the inductor, inductor to the capacitor, and this is, that's why it is called the LC oscillation. Thank you very much.